So for any given a string x of the length 4 unit, मान लीजिए suppose 4 sub strings are there, so triangular table will looks like. तो अभी आपने देखा था that first it will start from here, then. Okay, so here this is your I and j. So we fill all the values of x corresponding to its value. So it is going that each box, each row of xi with its value vij. Okay, so this is your x row and column wise x I or j, and we have some we have these x11, x2 and whatever. So why it is your x12? Because that's even a string has sub string of 4 unit का आपका string. Okay, that's why ये आपका ऐसा लिखा गया. So first we have to fill all the things. Then how we can fill that it is 4, then how this can be formed. So there is one formula I will tell you here. Just think about that. We have to start from bottom and we have to travel to the last of the substring. Starting substring of the string and last of that will be your top of that top of the last substring of that given string. So here some notations has been used. Okay, so xi represents a substring of x starting from the location I and has its length j. Okay, x और यहाँ तक आपको जाना है j. So suppose we have considered that x equal to x is a string and has the substring a b c d. ऐसा आप consider अभी करें. Just okay, A stands for one substring B and C. So number of substring can be calculated as n plus 1 divided by 2. So initially 1, 2, 3, 4 substrings are there. Okay. So आपका क्या हो गया 4 into 4 plus 1 divided by this, the value will be 10. Okay, so if you can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So first we have to draw the triangular to solve any parsing through that CYK. Quickly हम देखेंगे. फिर ये values आप जानते हैं x11, x21 कैसे ले रहे हैं. This is your x, ये first value है ना. तो x11a, x21 this b, x21 31 that's C and 41 will be D. Similarly आप इसको बोले ये A है तो ये B है, C है, D है. ये A है तो B है और ये C है. ये C है तो ये D है और ये तो D पहले से है. ठीक है, ये आप देख लें. ठीक है, अब उसी के correspond वैल्यू तो यहाँ पे देखिए A11 ये हो गया, A21 B, 31 C और ये D. उसके बाद ये इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो ये आपका A है, B C D आपने लिखा है तो यहाँ पे भी आपने क्या किया A B C D. तो इसकी वैल्यू क्या होगी x12. x12 का मतलब this प्लस दिस AB. ओके, देन x22 का वैल्यू क्या होगा, दिस इज योर B और C. x32 का वैल्यू क्या होगा, दिस में सी डी. तो अब आप देखिए वैल्यू 1 2 का हमने क्या बोला ए बी, इसका बोला आपको बी सी और इसका बोला आपको सी डी. सो जस्ट सी ए बी बी सी सी डी. उसी तरीके से आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे. सो ए बी सी, फिर 2 3 का क्या होगा बी सी डी, जस्ट सी ए बी सी डी. And last but not least, this is your x4 1 4. So this will be your what, A B C D. ठीक है, so this will be your how much A B C D. तो ये तो आपने x की वैल्यू कैलकुलेट की फॉर व्हाट, वैल्यू ऑफ 10. ठीक है, अब नाउ वही चीजें आपने यहाँ पे लिखा है.
दिस वन, ठीक। उसके बाद नोटेशन ऑफ दैट Vij. Vij represents the set of variable in the grammar which can derive from the substring xi. मतलब corresponding xi की वैल्यू हमें कैलकुलेट है। If the set of variable consists of the starting symbol, कहाँ से start हुआ, then it's become sure that the substring xi can be derived from that the given grammar, and substring xi is the member of the language of the given grammar, ठीक है। तो we have to derive and then we solve it. So here simple practical example for CONK का आपका है, ये क्वेश्चन आता है। तो ये तो सिंपल था, आपको एक स्ट्रिंग दिया रहेगा तो आप इमीडिएटली ये आपको फिल कर लेंगे, ठीक है। अभी आप चाहें तो इसमें वैल्यू आप फिल से कर सकते हैं, ABCD जैसे मैंने बताया। अब इसको रिप्लेस करके ABCD BCD CD और D हो गया, वैल्यू फिल हो गया, यही वैल्यू है उसके कॉरस्पॉन्डिंग्स, ठीक है।